दोनों ही फाइटर बहुत हार्ड लग रहे हैं मेरे को राहुल. दोनों की बॉडीज देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो है एकदम जैसे आग में से लोहा निकलता है ना. I mean to say iron that has just been freshly forged in fire. तीन लातें मारी हैं संदीप ने. बहुत बढ़िया. दोनों ही फाइटर बहुत अलर्ट और शार्प लग रहे हैं. आई एम लविंग द बॉडी लैंग्वेज ऑफ बोथ दीज फाइटर्स. एक और लो किक. Sandeep is doing a beautiful job with those low kicks, yaar. Oh, that was a hard punch. That was a hard punch. But Sandeep's thrown like 5, 6 of those low kicks. And Sandeep goes for a takedown, but Amrinder defends it really well. बहुत ही बढ़िया लेग किक्स. बहुत ही बढ़िया. He's thrown about 8, 10 of those now. Maybe 15. और स्पिनिंग किक. क्या बात है. एक और लेग किक. बहुत ही बढ़िया. ग्रेट वर्क फ्रॉम संदीप मैन. Yes, I agree with you. Amrinder's body language looks tough. Oh man, wow, look at that, bro. Those kicks are getting harder. Wow. Great work. Great work. बहुत ही बढ़िया स्क्रैम्बल. बहुत ही बढ़िया. संदीप के कॉर्नर को भी हम देख पा रहे हैं. बहुत इंटेलिजेंट कॉर्नरिंग कर रहे हैं वो. या एंड यूर राइट. अमरिंदर का एक ही गेम प्लान है, which is to throw a big right hand, and that's a yeah, and it's a mistake, man. It's a mistake. You can't enter a fight and just have one thing in your arsenal कि मैं एक बड़ा हाथ मारूंगा और फाइट खत्म कर दूंगा. That doesn't work. ये press this and then talk. अब छोड़ो, let him talk. रखो, आप रखो अपने पास. और अब ये काफी प्रिडिक्टेबल हो गया है कि अमरिंदर एक राइट हैंड ही मारेंगे. या और वो राइट हैंड मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल डील. अगर वो ढंग से लग गया तो गेम खत्म हो जाएगी. मुझे राहुल संदीप बहुत ही बढ़िया सीधा फ्लैट. कौन सा वाला है?
Rahul, there's a little bit of blood on Amrinder's body. That's Sandeep's blood, right? Well, I think that's because of the right hand, that vicious right hand that we've been discussing. And Aminder isn't stopping here. He still has that right hand in place. Whoa, nice stuff. Whoa. काफी इंटरेस्टिंग फाइट हो रही है राहुल, मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है मेरे को. And Manan, आप देखो, Sandeep has been pretty effective in keeping Aminder at a reasonable distance because of his kicks. Push kick, Mawashi, those roundhouse kicks, those calf slicers, andar se, bahar se, he's been throwing it. And we can see that Sandeep is bleeding. Rahul, even with these shin pads, after eating 20-25 of those kicks, what do you think happens to the front leg? भाई केज में तो सुनो रहती है उसके बाद पता लगता है what has happened. But of course, both these fighters are conditioned. They look conditioned. And this is my suggestion to all the fighters who are going to compete in amateur or pro circuit. Be conditioned, brace yourself for war. Absolutely, Rahul. फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक ओवरऑल टफनेस होनी चाहिए. लाइक लुक एट दीज टू गाइज. संदीप इज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज हेड, मैन. And if I was, I would have set up an uppercut. You're right. Even I would like to see more boxing from Sandeep. He's not boxing at all. Wow. Good combination. 1-2 by Aminder. And round 2. This is going to be a difficult round to call. Who do you think got this round? Well, I think it was. राहुल भाई, तीसरा और आखिरी राउंड शुरू होने जा रहा है. इस राउंड में पता चलेगा कि कौन जीतता है इस फाइट को. बहुत ही एक्साइटिंग फाइट रही है ये. अमरिंदर अपना मोटा हाथ लेके आ रहा है, संदीप अपनी लेग किक्स के साथ गेम खेल रहा है. बहुत ही एक्साइटिंग फाइट रही है ये, और ये तीसरा और आखिरी राउंड है इस फाइट का. So it was a tough call for the event commissioner to restart the bout after the injuries that Sandeep has sustained. However, since both these fighters are experienced as well as because they've conditioned enough, that's the reason the doctors as well as the event commissioner has given a go-ahead to start the bout for the third round. This is the last round. Let's see who gets it. बहुत बढ़िया लेग किक्स यार, नॉन स्टॉप लेग किक्स मार रहा है संदीप. दिस इज अमेजिंग मैन. दिस इज ग्रेट टू सी. दिस इज प्रो लेवल वर्क. एंड अमरिंदर कोशिश कर रहे हैं बार बार पंचेस मारने की, बट एक भी लैंड नहीं हुआ है उनका अभी तक. Oh, that kick rattled Amrinder. He went off balance there, man. Fantastic. Wow. Oh my God. This is great work from Sandeep, bro. What a fighter. Well, yes, Manan, if I have to say, something about Sandeep's kicks, they are good. But again, he's not throwing a proper roundhouse kick. He's throwing more like a football kick. If it has to be a roundhouse kick, I'm sure it can actually rattle Aminder off his balance. So I'll tell you why I think he's doing that. Because he wants to keep his hands up and he wants to stay square. Oh, he shouldn't be against the cage. This is a bad place to be with Amrinder. He needs to get out of the cage. Ooh, that was a hard shot. केज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए संदीप को. संदीप को मूव करते रहना चाहिए. संदीप को मूव करते रहना चाहिए क्योंकि अमरिंदर का प्लान है सिर्फ पंच करने का. ओ, टेक डाउन की कोशिश. संदीप को खड़े नहीं रहना चाहिए. वो जितना मूव करेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा. और अमरिंदर को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? Manan, Aminder के पास बस कुछ seconds और हैं to finish this bout. I think he has to just barge in with all his power and start throwing as many combinations as he can. Just not rely on that big right hand which he's throwing again and again since round 1. So Aminder को यही उसके पास opportunity. अमरिंदर ने एक भी लात नहीं मारी है इस पूरी गेम में. बिल्कुल भी नहीं He मारी needs है. to develop other tools, यार. You cannot keep He's on. not You even can't play attempted. MMA with one weapon. For sure, he's not even attempted or set up even a single takedown. Well, as we predicted, it's going to be a striking battle. And here we are. I think if Sandeep survives this round, he's won the fight. Nice.
Manan, if Last 10 seconds. how many kicks? A trivia for you. How many kicks Sandeep has thrown in this bout? Enough to win the fucking enough to win the fight, man. Excuse my French. Amen. Well, bit of celebration from Sandeep, but let's go over to the judges. Let's see who's got it. All, kudos to his determination, great patience, and those deadly kicks that he's been throwing. Congratulations. Kicks देख के मेरे को मजा आ गया.